Well, good afternoon, everyone. And please let me know if I'm audible and screen is also visible to everyone. Yes, Mr. Shakeel, please confirm. yes, confirm. Thank you very much. And I welcome all participants to join us today to discuss this very important session about management defined performance measure. As a matter of fact, this is in fact the one of the features which is explained in IFRS 18, which is going to become a crucial feature in our financial statements. Not only its presentation, its disclosure and then reconciliation would also be one of the very important areas that we will be dealing with. If I just take you through this, just hold on, I guess. Well, if I just take you through the the overview that we would be covering today, that is in fact the MPM. How do we identify it? What does this MPM mean? We will also discuss the subtotal, which in fact make these MPM, means it's a subtotal of income and expense, how to disclose it, and what does this MPM mean in terms of the net of incomes and expenses, either that would be an adjusted profit or EBITDA, or there are certain confusions that I'll discuss today. And the very important thing is that what is its link with the public communication in terms of like its disclosure. So meanwhile, whenever you feel any point to discuss in detail, you may raise your hand and you will be brought in the discussion and we will discuss your point. But at the same time, at the end of the session, we will hold a question answer. Well, please, can everyone mute their mic, please? Okay. Okay, so now, well, so in fact, I just want to get rid of this pop-up thing. Okay. Before I start talking about the MPM, which is our, in fact, today's topic, let me just talk brief about IFRS 18. What are, in fact, the changes that 18 will be bringing in the presentation of financial statement? Not only the presentation of the statement of profit loss would be changed, it will
also cause a change in preparation style of statement of cash flows, and it will carry an impact on the calculation of earnings per share. But this is not our today's topic, by the way. Just to give you a more brief about the use of this IFRS 18 in preparation of financial statements, it has introduced two subtotals in addition to the earlier subtotals which were part of the statement of profit loss. Subtotal means the gross profit is one of the subtotals and the profit after tax is one of the subtotals. But it has introduced operating profit and profit before finance and income tax. This was not part of the presentation of statement of profit loss earlier. Now it is a part of the statement of profit loss as to this IFRS 18. And our today's topic, MPM. Now this MPM is to be presented and disclosed in the financial statements. So mainly when we talk about the recognition, measurement, presentation, and disclosures, which are the four main features of the IFRS, will not find any change in the recognition and measurement thing based on this IFRS 18. But yes, presentation and disclosures will see a change of discipline, or you can say presentation and disclosure would be changed based on this IFRS 18's requirement. Having said this, the important thing is to understand the definition of MPM. Remember, it is management's own or management's defined performance measure. Look, when we talk about performance means profitability. This is what we all know very well. Like gross profit is a performance. Operating profit is a performance because it is net of the incomes and expenses. But these are defined by IFRS. There are few performance measures which in fact are not defined by the IFRS, but these are defined by the rating. It is defined by the management. Therefore, management owns those performance measures, and not only owns, but also use those performance measures publicly. This is a very important area to understand in terms of MPM. That it is defined by the management or formulated by the management, simply saying. And it is also the subtotal which is used publicly. That how management views the financial performance of its entity. So when we say like this, it means it could be an adjusted operating profit. There could be some changes in the operating profit figure, like profit before restructuring is an adjustment, or profit before the research and development expenditure. It is also an adjustment in the operating profit, or some sort of adjustment in the EBITDA, etc., or the core profit. This is what we will be discussing in the upcoming slide. But the very important point that will be the base of understanding the MPM is the 5-gate test.
If that 5-gate test is satisfied, we are done with that MPM thing. So if that 5-gate test is failed, it means there is no MPM as to IFRS 18 that needs to be disclosed or presented in the financial statements. So what is that 5-gate test? Number one is that it should be a financial measure. Number one. Financial measure means that, say, if you measure employees turnover ratio, that is not a financial measure. Okay. If you are just talking about the quantitative number other than the like having financial impact, so it is non-financial, very simple as that. So very important thing that it cannot be linked with the MPM, that all the KPIs could be MPM. So one thing should be very clear, that only those KPIs which are having financial information, this is the gate one, will fall under this MPM. The second thing is, not all those financial information based KPIs would be termed as MPM. Only those would be termed as MPM which are the subtotal of income and expense. So now it is narrowing down the definition of MPM to the statement of profit loss only. Because when we say current ratio, that current ratio is also a financial measure, but that does not belong to the net of income and expenses. So that should be a subtotal of income and expenses. The third gate is that should be used publicly. If we are not communicating, this is in fact a separate topic that I'll be covering in upcoming slides, that what does it mean used publicly? So if that is not used publicly, means outside the financial statement for informing some financial performance of the entity to the potential or current or present stakeholders, let me say, that would not be termed as MPM. So first thing is should be a financial measure. Second, belonging to the statement of profit loss, means net of income and expense. Third is it is used publicly. Then management view. There is a performance which is viewed by the management for the entity. If management does not view that performance as a success factor of the entity, it means that cannot be termed as MPM. And finally, it should not be defined by the IFRS, as I've told you, that gross profit is IFRS defined MPM, IFRS defined PM, you can say, performance measure. That is not management defined. So you can call it IPM and MPM, you can say. So IPM is IFRS defined performance measure and MPM is management defined performance measure. So if that is IFRS defined performance measure, obviously that cannot be termed as MPM. Okay. So these 5-gate tests is very important to be passed on. Next comes, as I told you, that subtotal of income and expense means that you are netting off your incomes with the expenses. So, like, there is an expense, list of expense, that when we subtract from the income, we get
operating profit, but this is IFRS defined performance measure, because this is the operating profit that is usually calculated as per the requirements of the IFRS. Restructuring is an expense against the provision that we create under IAS 37. So this is IFRS defined performance measure. But when we say that we need to communicate to the public that had this restructuring not happened in our organization, what would have been the profit of the entity? So that would have been 250. So this is the adjusted profit. Now it is management defined performance measure, which the management is communicating to the public and viewing it as a performance of the entity. So I trust that now we are clear on this subtotal thing. Now public communication, which is very important to be understood. That let me talk about the exclusion first. That what is not included in this MPM? The oral communication, the written transcripts of the oral communication, social media posts. These are not public communication modes or methodologies. So exclude all these oral or transcripts or social media things. Means what to include? The management commentary that we mostly see in the annual reports, the PRs, press releases, which are communication officially undertaken by the management to inform public about the performance of the entity, and the investors' presentations. So these are taken as public communication. Management view is that there is a subtotal, as we have discussed in the previous slide, which is presumed to be communicated to the public, carrying a management standpoint or the viewpoint, unless the entity rebuts that the presumption with reasonable and supportable information, unless that is rebutted. Otherwise, if that is communicated through these communication modes, that is in fact the management's viewpoint that is presumed to be a management view or the point of view. There were few sort of IFRIC clarifications which were discussed in June 2026, which are still tentative, remember, because that has not been released as a new IFRIC, but if that is released, that would be IFRIC 23. So it is that if we confidentially pitch material which is shared with a small number of identifiable investors under non-distribution terms, were tentatively viewed as not public. So this is a viewpoint which is discussed under this IFRS committee meeting, and it is very recent in June 2026. So public does not mean every external communication, remember. So we have to check the channel, the audience, and the confidentiality as discussed in June 2026. Next comes, which is not MPM, because now we will be putting all that 5-gate test on it, and we'll see that could it be taken as an MPM like free cash flow. Now, free cash flow is a net of cash inflows and outflows not relating to the incomes and expenses. When we say income and expenses, you know very well that accruals are the basis to measure incomes and expenses.
Whereas cash flow does not fulfill the criteria of measuring the incomes and expenses based on the accruals. Therefore, free cash flow does not come under the definition of MPM. Return on equity, although a profit loss item is appearing in this KPI, but it is not a net of income and expense. It is based on an equity item. The profit based on an equity item is not fully talking about the net of income and expenses. It's a ratio. Then net debt is again a net of your assets and liability. We're talking about net of assets and liabilities, not net of incomes and expenses. Then customer satisfaction is a non-financial KPI. The number of articles returned, the number of units sold, the loyalty of the customer, employee turnover ratio, etc., etc., etc. All these are non-financial KPIs, do not pass the 5 gates criteria. Operating profit, okay, it is net of incomes and expenses, but it is not management defined. It is IFRS defined. Okay, so what I discussed with you, that it should be management defined. Okay, not IFRS defined performance measure. Again, gross profit, that is IFRS defined, listed in the paragraph 118 of this IFRS 18. Operating profit before depreciation, amortization, and impairment. Again, this is listed in IFRS 18's paragraph 118 that we will not consider it as our MPM, because this is the profit that is very much closer to the EBITDA, and EBITDA mostly is used for MPM. There is a separate discussion on EBITDA that I'll be discussing with you after a few slides. Then profit before tax or continuing operation, it is also listed in 18 that we will not consider it as our MPM. So not an MPM does not mean not important. This is important thing to understand. If any calculation or KPI is not an MPM, doesn't mean that it is not carrying importance from the standpoint of the stakeholders. That could be a very crucial KPI. That could be a very crucial measurement tool in terms of the performance of the organization. But that is not an MPM. So not an MPM doesn't mean that it is not important. Remember this thing, very important, after IFRS 18 especially. So IFRS 18 MPM note requirements do not apply. If it is like, here we should say IFRS 18 means that we are talking about the management defined performance measures only. Okay. Well, so the MPM or not MPM, there is a very brief presentation in front of you that will explain that if it is an adjusted profit, adjusted operating profit, yes, it could be an MPM. Why? Because it is a profit loss subtotal. It is normally used publicly to communicate management view. And this is not IFRS defined performance measure. Adjusted EBITDA. Again, yes, I'll discuss
little more on this adjusted EBITDA right after a few slides. Again, yes, because it depends on exact calculation and public use. How do we use it? So we cannot decide in isolation of this EBITDA that yes, it is EBITDA, should be MPM. So we need to have a little more discussion on it. Then, as I have discussed with you, there are certain performance measures, simply saying, which are discussed in 18 and paragraph 118, which we cannot consider as MPM. Okay. And then gross profit is IFRS defined. Okay. Free cash flow return, we have already discussed this one. Now, the presentation of MPM. By the way, this is the area which would be taken up more deeply by Mr. Shakeel. But just let me talk a little on it. That there are two scenarios. One scenario means there could be two possible presentations, you can say. Could be a line item in the statement of profit loss, or could be defined or disclosed in the notes. I'm just saying that let it be note 30. So what you're saying that here there is an operating profit of 200. And the note 30 will be disclosing the MPM with the adjustment of restructuring expense of 50 equal to 250. Or otherwise, the second scenario could be MPM is also shown in as a line item in the profit loss, means after this 250, giving the note reference, we subtract the restructuring, then this. So these are the two. But mostly popular would be this, because there could be certain more adjustments that we will be disclosing in the notes. So we will be preparing our statement of profit loss in a usual format as recommended by IFRS 18. Remember, the recommendation or that would become mandatory is different from the statement of profit loss that we are usually preparing today under IS1. Means obviously there are 3 categories now, rather 5 categories that we in fact have already discussed in our earlier webinar. Anyways, let's move forward. So the single note about the MPM is the other very important area in the disclosure. That for disclosing the MPM, there should be a single note. This is its discipline and transparency, that it should be single, explaining all together related to MPM. So the aspects of performance, its calculation, its impact on the income tax, its usefulness, its reconciliation, and the change and the reasons would be described in one single note. How it will give you a look. For example, say the operating profit as per 18 is 200, add back restructuring 50, we get MPM, which is management defined performance measure 250. Now we will calculate its income tax impact
that what is the income tax impact that this MPM would carry, and its share for the NCI. So that needs to be disclosed over here, that how much NCI would be having share out of this, and how much would be the impact on the profit, on the income tax or the corporate tax, whatever we call it. So the explanations that we need to include: define the restructuring item that we are going to put this restructuring thing, what is like taken under IS 37. We have to define the restructuring item, explain why management excludes it, describe how the MPM is useful, and state how the tax impact was determined. But remember, the expense remains recognized in the statement of profit loss, IFRS statement. Means it's not something that we have already discussed, obviously, that the statement of profit loss would be prepared in a URID format, and the URID form and the recognition and measurement will never be changed. What is going to change is presentation and disclosure. Okay. Reconciliation means it does not stop at the profit, that we have reconciled profit, operating profit, add less whatever that provision for restructuring thing, or like research and development expense, etc. It does not stop at that level. Remember, we need to disclose its impact of tax and its share in NCI. It is very important disclosure. Okay. So tax and NCI effects at the same time when we are developing the reconciliation, should not be taken at the end. Yeah, MPMs could be changed. So you can change the MPM name, you can change the calculation, okay, the adjustments, etc. Because the view of the management is important. If the view of the management, how management looks into the performance of the entity gets changed, obviously the MPM will change. So what to disclose would also be changed. Its reason would also be changed. The comparative would also be changed. So what we need to do in terms of controlling all this to maintain register of MPMs, which we use to communicate with the public, and then compare it with the financial statement. So the better practice is clear change note explaining what was changed and why. Should be very much clear, very much clear. And the bad practice is just adjust profits, and this year core profits, and do not explain. So we have to go with the practice which is best. Now I'll talk about the EBITDA. We know very well that EBITDA is normally taken as a measurement tool to identify or to review the performance of the personnel related to the operations. Because the supposedly COO says that why my performance is being reviewed based on the heavy depreciation. I never recommended to purchase or to import
expensive machinery. Expensive machinery is causing higher amount of depreciation, ultimately causing reduced profit. And you are relating that reduced profit with my performance? Doesn't make any sense. In the same way, amortization could be different based on its pattern of benefit. The pattern of benefit is not defined by the COO. CEO is focusing only on the operations and asking for reviewing his or her performance, not based on even like tax. There could be an organization working in tax-free zone, and there could be an organization working in a high tax zone. The performance of the COO should not be based on profit after tax. Therefore, EBITDA is mostly considered as a performance measurement tool for the people engaged in operations. It's very important. The next importance of EBITDA is we see when we value the organization, means calculating the enterprise value based on market multiple. We know market multiple is applied either on sales or EBITDA mostly, because EBITDA, in fact, does not consider most of those expenditure side, which may vary based on the non-operating decisions. Therefore, EBITDA is very important. So the question arises, should this EBITDA be taken as an MPM or not? It depends. That how we are measuring it. Often we'll say that it is considered as MPM if we are using this EBITDA publicly. And obviously, it is calculated as a subtotal of income and expenses, which are not specific to the. So obviously, EBITDA is not IFRS defined performance measure. But the only thing is, are we using this EBITDA to communicate to the public as our viewpoint? R means the management's viewpoint. If yes, okay, it has passed all those 5 gates. The operating profit before depreciation, amortization, and impairment may not be an MPM. And especially it is discussed in paragraph 118. Why? There is one more thing that comes under operating profit, by the way. That is the investing income. Okay, because when we say operating profit, if you come from sales minus cost of sales, gross profit minus operating expenses, okay, there comes your profit before your other incomes, which is now would be income from the investing category. Then comes your profit before financing and income tax. After subtracting financing category, then comes your profit before tax, and then income tax category and discontinued operations. This would be the format under IFRS 18. So anyways, 118 clearly says that operating profit before, because that has already been taken under EBITDA. So EBITDA, if EBITDA is used only internally or in a private loan agreement based on the covenants, the public gate is not met. It is not being passed through the public gate. Therefore, it will not be considered as. So the main thing is, we are not talking about the formula of EBITDA. That remains the same. The main thing is, are we communicating it publicly?
If yes, then it is your MPM. So main point is the 5 gate should be applied. 5 gate test should be applied. So in no time, 60 seconds means no time. Okay. In no time, you can now decide either it is your MPM or not. Financial year, yes or no, you can easily work it out. Subtotal of income and expense, do we use it publicly? Do we have a management view on it? Okay. And is it defined by IFRS? If everything is like, means it is not defined in IFRS. If everything is meeting that criteria, yes, it is your MPM. But if it is not publicly communicated, it is not MPM. Okay. Now, next thing is that how to disclose it. Well, this is like from public message to audited notes. What we see that public communication is like investor deck, press release, management communication that we have already in fact discussed. There should be an MPM register we have already discussed. Okay. List all non-IFRS subtotal, means which are IFRS defined. IFRS defined is my terminology that I am giving it to. Means management defined and IFRS defined. So carry this concept in your mind. You will never be misled. IFRS defined performance measure that we see in the statement of profit loss. Management defined performance measure that we normally do not see in the statement of profit loss, but needs to be disclosed in the notes if that passes the 5-gate test. This is very simple. Next comes the reconciliation and the single MPM note. So this is what like we have learned in this session yet. So finance teams should prepare the register in which all the KPIs and their adjustments should be kept, which are publicly communicated. Their mapping with the 5 gates test, then reconciliation from each, means this is what you are supposed to do now, the professional accountants, which are having a big challenge to come, which they need to address in the upcoming days. Working for income tax, template wording, and comparative year calculation. Okay. And change logs. So the CFOs or the reporting managers, the auditors, you have to be well prepared before the time is on your head. As I talked about the IFRS that was tentatively addressing the MPM related clarification. And it would be open for comment till 9th of September. It talks about the confidential investor presentation, which is only disclosed to the smaller number of the identifiable shareholders. Since it is not public or open to the public, therefore, we do not consider it. But again, it is open for the comments. Therefore, it is a tentative MPM clarification, which will become IFRS once it passes through all the criteria of becoming IFRS. Okay, that would be IFRS 23, by the way. Well, these are the mostly asked questions that, in fact, we just have list down. Might be these are coming in your mind. That does MPM change the original profit loss? The thing is, we are not going to change the original profit loss. That will remain be the same.
that will remain be, you can say, as per the requirements of IFRS 18. MPM is just disclosed and reconciled in the notes. As I just symbolically put note 30 on it, only beside MPM if the MPM is presented on the face. Otherwise, note is standalone. Is free cash flow. I have discussed the thing. I have discussed profit, operating profit, that it is not MPM. Okay, it is IFRS defined. Free cash flow is like relating to the cash flows. Does an earnings call or social media post count? No. Social media posts or oral communication or transcripts are not public communication. Can law regulation affect the scope? Obviously, yes. And there could be a change in the MPM. A legally required subtotal may support rebutting the management view presumption. So we need to assess the facts. So when we see that company publicly says in its investor presentation that adjusted profit exclude the restructuring of 5 million and foreign exchange loss of 2 million, IFRS profit before taxes 40 is adjusted for profit, and then IFRS subtotal should be reconciled, and then explanations are required, and then its impact on tax and NCI would be. So you can like work it out as an MPM is like 47 with the impact of tax and NCI. It's just simple numerical thing that I just put in front of you. So what to do for the finance people? That you have to be very much like well prepared before it becomes mandatory. It is in fact mandatory. Build MPM inventory, as I've discussed with you. Identify what are your public communication modes. Then your reconciliation templates should be ready. Dry run should be done. Okay, align your board pack, investor deck, financial statement note template. A dry run should be done. And then 2027 report, apply 18 and keep documentation audit ready because it would be then audited. Well, this is again a repetition. I'm not going to read. Remember all this thing. You would be having all this material with you. And 18 does not ban adjusted measure. It makes them transparent. And that's all from my side. And now, Mr. Shakeel, please, over to you. You have to discuss some practical aspects of it. I'll just finish my presentation. Thank you very much. Thank you very much, all the participants. So over to Mr. Shakeel. I guess. You are mute. Stop sharing. You can unmute now.
Assalamu alaikum ji. Thank you, Mia sir. Thank you very much. It's like a very good presentations you have conducted. Everyone enjoyed. I was really enjoying your conversations. Really, the slides are very good, and the conversations, the more you have distributed the uh, slides, and you when you explain everything, it's very much interesting, very much productive, very much uh, telling us about IFRS. This is a very hard topic, is unable to understand, but in the way you have presented your presentations, really it was very good. So now I have to participate only for 10 minutes. I will take only 10 minutes, and I will convert my language into Urdu. सो अभी जिसको उर्दू नहीं आती सो सॉरी, बट अभी जो आगे 10 मिनट में बात करने लगा हूँ आपसे, वो बस मैं आपसे उर्दू में बात करूंगा। तो मियाँ साहब ने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा। तो मैं 10 मिनट लूंगा, और इस 10 मिनट के अंदर जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा इसको ना प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हम इसको को कैसे प्रैक्टिकली करेंगे। सर मियाँ साहब, मुझे आप होस्ट बना देंगे तो मैं अपनी स्लाइड शेयर करता हूँ। आप मुझे होस्ट बना दें, उसमें पार्टिसिपेट में जाके वहां से मुझे होस्टिंग करें। मैं फिर अपनी स्लाइड शेयर करता हूँ। ओके, थैंक यू। मैं होस्ट बन गया, मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है जी, अब 10 सेकंड के लिए हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम इसको। सो आप लोगों को मेरी स्लाइड नजर आ रही है जी? स्क्रीन शेयर होगी मेरे साथ? ओके, थैंक यू। चलिए जी, अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं सर। 10 मिनट का लेक्चर बाकी रह गया है। 10 मिनट के अंदर जिसको वाइंड अप करते हैं, जो भी मियाँ साहब ने भी बताया है उसको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह अभी 10 मिनट के अंदर। और ये मैं ज़रा उर्दू में करूँगा, ताकि हमारी तो बाई लैंग्वेज जो है, एक इंग्लिश भी हो गया है और थोड़ा सा उर्दू भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। यहाँ हम बात करते हैं कि हम बात करेंगे मैनेजमेंट मेजर्स की। तो मैयर्स की बात हम करते हैं। हमारे पास एक पीएनएल बना हुआ है, ये आईएफआरएस ने जो 18 है उसने हमें कहा है जी कि ये नया फॉर्मेट आपके पास आ गया है, इस नए फॉर्मेट पे जो है आप अपना पीएनएल बनाएं। तो यहाँ हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एबीसी एक कंपनी है जिसने अपने अकाउंट्स क्लोज किए हैं। अब उसने क्या किया है, सेल उसने सेल दे दी है अपनी, सेल के बाद कॉस्ट ऑफ सेल लेस कर दिया है, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट को ये कह देता है ये सब सब टोटल है। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जैसे माइनस किए हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, कुछ ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव हैं, और बाद में उसने निकाल दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है इस पूरे जो एक इसका पोर्शन बना है पीएनएल का, उस पोर्शन में दो चीजें जो हैं स्टैंडर्ड आपको बता रहा है कि वो सब टोटल है। नॉर्मली जो एमपीएम है, जो मैनेजमेंट के जो मेजर्स हैं, मैनेजमेंट की जो इकदामात हैं, जो मैनेजमेंट पैमाइशें करेगी, वो स्टैंडर्ड को बाउंड कर रहा है कि भाई आपने जो कुछ भी करना है आपने सब टोटल पे करना है। और सब टोटल टोटल जो है वो आईएफआरएस ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है कि ये आपके सब टोटल है। जिस तरह कि हम लोगों ने ये पहला जो आपका फॉर्मेट लिया है, इसमें हम देख रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ दो सब टोटल हमारे सामने आ रहे हैं। एक को हम जीपी कह रहे हैं और दूसरे को हम कह रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आईएफआरएस 18 आपको कहता है कि भाई आपने इन दो चीज़ों को आप जो है वो मैनेजमेंट डिफाइन परफॉर्मेंस में जो है इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ यार, मैं एमपीएम में जो है मैं सेल को चेंज कर देता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो स्टैंडर्ड कहता है नहीं, आप नहीं कर सकते। आप सेल को एडजस्ट नहीं कर सकते। जो आपको एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप चेंज कर सकते हैं, को आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके सब टोटल्स हैं। मैं कहता हूँ यार, मैं इसमें जो है ना, मेरे पेमेंट एक्सपेंसेस आए हैं, पेमेंट एक्सपेंसेस जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, उसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो स्टैंडर्ड मुझे कहता है नहीं, ठहर जा भाई, नहीं करने दूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ सब टोटल को जो है एडजस्ट कर सकते हैं, आप किसी चीज़ को एडजस्ट नहीं कर सकते इंडिविजुअली। आप ना सिर्फ रेवेन्यू को एडजस्ट कर सकते हैं इंडिविजुअली, ना आप इम्पेयरमेंट लॉसेस को कर सकते हैं, ना आप रिवेल्यूशन आप इंडिविजुअली किसी चीज़ को नहीं कर सकते। आप सिर्फ सब टोटल को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा पहला पोर्शन ये का बना है, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जो पोर्शन बना है, उसके अंदर मैं देख रहा हूँ मेरे पास सिर्फ सब टोटल दो आ रहे हैं। एक ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है और एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, वेरी कंफर्ट बहुत ज्यादा तरीके से बाउंड कर रहा है कि भाई साहब आप सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट को एडजस्ट कर सकते हैं, या आप अपने प्रॉफिट प्रॉफिट को एडजस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई चीज एडजस्ट नहीं कर सकते। तो अब मुझे समझ आ गया कि जो मेरा पीएनएल है, इसके अंदर मैं जो दो चीजें चेंज कर सकता हूँ, वो क्या चीज चेंज कर सकता हूँ, वो सिर्फ मैं ग्रॉस प्रॉफिट जो कि सब टोटल है, और मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि सब टोटल है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं किसी चीज को एडजस्ट नहीं कर सकता। क्लियर? सब टोटल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आईएफआरएस जो लेके आया।
अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरा ये मेरे जो पीएनएल बना हुआ है इसके अंदर मैं तीन चीजें देख रहा हूँ जो मुझे अनयूजुअल नजर आ रही हैं। मैं देख रहा हूँ इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट जो है वो 900 मिलियन जो है वो IFRS 36 ने जो है ना वो माइनस कर दिया है। उसने कहा जी पेमेंट हो चुकी है, इंडिकेशन आ चुके हैं। तो जब मैंने आई एस 36 लगाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जनाब ऑडिटर कहते हैं जनाब आप 900 मिलियन जो है आप यहाँ से माइनस करें, अपना प्रॉफिट कम करें। मैंने प्रॉफिट कम कर दिया अपना। उसके बाद मेरी कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। अब रिस्ट्रक्चरिंग IS 37 में आती है, वहां पे वो कहता है जनाब आपको ये 1400 मिलियन जो माइनस करना है। मैंने वही माइनस कर दिया। कुछ थोड़ा गेन हुआ है, गेन हुआ है तो वो मैंने ऐड कर दिया। तो ये तीन चीजें जो हैं मेरे प्रॉफिट 1200 मिलियन, 12,000 मिलियन के अंदर ये तीन चीजें आ रही हैं जिससे मैं मैनेजमेंट हूँ, मैं एग्री नहीं करता। मैं कहता हूँ यार अगर ये तीन चीजों का इफेक्ट इसमें से निकाल दिया जाए तो मेरा प्रॉफिट तो 13.7 मिलियन हो जाता है। तो मेरा प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन IFRS ने क्या किया, मुझे आके रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई आपका प्रॉफिट जो है वो 12,000 है। लेकिन मैं पब्लिकली ये नहीं शो करना चाहता। मैं पब्लिकली अगर 12,000 लेके जाता हूँ तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, मुझे लग रहा है कि मेरा बिजनेस जो है वो मैं अपने शेयर होल्डर को सेटिस्फाई नहीं कर सकूंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं मार्केट में जाता हूँ और मैं जाके न्यूज़पेपर में जाके बताता हूँ लोगों को यार नहीं मेरा प्रॉफिट 12,000 नहीं है, मेरा प्रॉफिट तो 13,700 है। मैं न्यूज़ लेटर इशू करता हूँ, मैं अखबारों में दे रहा हूँ, मैं पता नहीं क्या कुछ कर रहा हूँ। लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही कि यार हर बंदे को जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ उसको पता चल रहा है कि मेरा प्रॉफिट 13,700 है। तो अब स्टैंडर्ड है IFRS 18 ने कहा यार तो परेशान क्यों हो रहा है तुझे, अगर हमने एक तरह रोका है तो एक तरफ हम आपको छोड़ भी देते हैं। तो बजाय ये कि इतनी पब्लिकेशंस कर रहा है यहाँ यहाँ जगह लोगों को बता रहा है और सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है कि लोगों को पता चल रहा है कि यार मुझे मेरा प्रॉफिट 12,000 है कि मेरा प्रॉफिट 13,700 है, नो प्रॉब्लम। तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही शो कर दे। तो जो तेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा होगा उसको पता लग जाएगा भाई कि तू क्या करना चाह रहा है। तो इस तरह तेरा टाइम भी बच जाएगा, तेरी टेंशन भी दूर हो जाएगी और लोगों को पता भी चल जाएगा कि तू क्या क्या चाह रहा है, मैनेजमेंट क्या चाह रही है। अब प्रॉब्लम ये आई कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या, मैं 12,000 को चेंज कर दूं। तो तो स्टैंडर्ड कहते नहीं आप 12,000 को चेंज नहीं कर सकते, वो तो आपका IFRS के हिसाब से पीएनएल बना हुआ बिल्कुल ठीक है। तो आप एक स्टैंडर्ड्स को डेविएट नहीं कर सकते, आपको 12,000 के हिसाब से ही जो है वो प्रॉफिट जो है दिखाना है। हाँ, आप एक एडिशनल नोट लगाएं। आप एक एडिशनल नोट लगाएं हैं जिसको आप MPM का नाम दें, उस नोट के अंदर जो है आप इसको एक्सप्लेन करें कि भाई प्रॉफिट 12,000 ठीक है ऊपर आपको फ्रंट में नजर आ रहा है, लेकिन असल में 12,000 नहीं है, वो 13,500 है। अब क्या हुआ, अब मैंने कहा चले नोट नीचे लगा दो यार। नोट जाके मैंने जिस अभी यह सब स्लाइड में बात चल रहा है नोट नंबर 30 लगा दिया। अब लोगों को पता कैसे चलेगा कि यार एक नोट नंबर 30 लगा हुआ है। लोग तो उठाते हैं, उठाते उठाया, जाके पीएनएल देखा और बंद कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। लेकिन अब मैंने तो नोट नंबर 30 लगाया हुआ है, अब लोग कैसे जाके पता लगे यार एक नोट नीचे लगा हुआ है MPM का। तो उसके तरीके जो है स्टैंडर्ड ने दो बताए हैं। उसने कहा एक तो एक तरीका ये है कि आप सिंपल जो है ना इसको ना छेड़ें आप, और आप जस्ट जस्ट नोट लगाएं और आप एक फ्रंट पे जो आपका टाइटल पेज है उसके नीचे जाके उसका नोट लगा देंगे यार हमने MPM भी लगाया हुआ फलाने पेज पे। लेकिन वो मे भी हो सकता है कि टाइटल पेज को लोग ना पढ़ें, वो लोग जाए सीधा जाके पीएनएल पढ़े और पीएनएल पढ़ के जनाब उनको नोट का पता ना लगे। तो वहां पे स्टैंडर्ड ने एक और ऑप्शन दी है। स्टैंडर्ड का चले आप ऐसा करें, अब जो पीएनएल है आपका, पीएनएल के अंदर आप एक एडिशन लाइन बनाए और वहां पे एक एडजस्टेड जो है वो नोट लगा दें। और उसको आप उसका आगे नोट नंबर लगा दें। इस तरह पे अभी सेल आ रही है, सेल सेल आपने लिखी नेट सेल और आपने लिखा नोट नंबर 5। तो आपको पता चल रहा है कि नोट नंबर 5 पे जाकर आप इसका ब्रेकअप दे सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल पे आपने लगाया नोट नंबर 6, सेलिंग में आपने लगाया नोट 7, एडजस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नोट 8। इसी तरह आप यहाँ पे एक नए रो इंसर्ट करेंगे और वहां पे लगाएंगे एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट पे आप लगाएंगे नोट नंबर 30। तो वहां पे जब आप लगाएंगे तो वहां से उसको पता चल जाएगा यूजर को कि यार आपने जो है ना एक एडजस्टमेंट्स की हैं जिसकी डिटेल जो है वो नोट नंबर 30 में है जो कि MPM का नोट है। अब क्या, जब आप यहाँ पे एक रो इंसर्ट करेंगे और एडजस्टेड GP लगाएंगे तो क्या आपका ये फॉर्मेट इसका चेंज होएगा? ये चेंज नहीं होगा। वो ये सब के स्लाइड्स देखेंगे तो वहाँ पे उसने वहाँ पे हमने समझ एक्सप्लेन किया है इसको कि जब आप ये नोट लगाएंगे एडजस्टेड लगाएंगे तो आपके नीचे 12,000 ही आएगा नेट रिजल्ट। बस थोड़ी सी फिगर जो है वो शफल होंगी ताकि लोगों को पता चले कि आप MPM का नोट लगा हुआ है और वो जाके नीचे नोट देख लें। नेट रिजल्ट आपका फ्रंट पे 12,000 ही आएगा। उसके अंदर आप एक रो इंसर्ट करेंगे और वहां पे लिखेंगे एडजस्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट और उसके आगे नोट नंबर 30।
और उसको आप अगली सब स्लाइड्स आप देखेंगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि अपने अपने ये P&L का स्केच कैसे बनाना है। बट द एंड रिजल्ट जो है वो आपको 12,000 ही रहेगा। चलें, ये तो बात हो गई, हमें समझ आ गई कि अब हमने एमपीएम ने क्या करना है, किस तरह ये 13,000 शो करना है। तो अब स्टैंडर्ड कहता है कि आपने इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड में कुछ बातें नहीं, स्टैंडर्ड का देखें, जब आप ये नोट लगाएंगे तो आपको इन चीज़ों को ख्याल रखना पड़ेगा। वो क्या क्या चीज़ें हैं? नंबर वन, स्टैंडर्ड कहता है देखिए जनाब, आपने क्लियर लेबल करना है कि एमपीएम है। आप ये क्यों करना चाहते हैं, आप इसको रीजन देनी है भाई, आप क्यों कह रहे हैं कि ये चीज, जो 3 चीजें आपने हाईलाइट की है, ये इसका ये क्यों आप इसको बस करना चाहते हैं। स्टैंडर्ड जो बने हुए हैं, स्टैंडर्ड ने आपको अलाउ किए हैं, आप कहते हैं यार हम स्टैंडर्ड को डेविएट करेंगे, हमें ये चीजें नहीं चाहिए, पेमेंट को आप हम नहीं मानते, आप कहते हैं यार पेमेंट नहीं हो रही। तो जो भी वट आर द रीजन, किस रीजन की वजह से आप जो है आप ये इन चीजों को एड बैक करना चाहते हैं, वो सब आपको बतानी पड़ेंगी। आपने कैसे कैलकुलेट किए हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा। आपको इसको कंसेशन माननी पड़ेगी कि पहले वो ये 12,000 था, अब ये बीच में 13,700 हो गया, इसके परिणाम में क्या हुआ है, क्यों हुआ है, सारा आपको बताना पड़ेगा। फिर आपको बताना पड़ेगा कि इस पे जो है ना टैक्स का इम्पैक्ट क्या आएगा, इस पर जो एनसीआई है आपके, जो नॉन मॉनिटरी दूसरे आपके मॉनिटरी शेयर होल्डर बैठे हुए हैं, उन पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, वो भी आपको बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे साथ क्या होने लगा है। कोई पिछले साल आपने कोई कंपैरेटिव बनाए हुए हैं तो उसका भी आपको बताना पड़ेगा, भी पिछले साल में ये ट्रीटमेंट लिया था, अब इस साल में ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये डिफरेंस हो गया, वो आपको सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो स्टैंडर्ड आपको ऑलरेडी डिफाइन कर रहा है कि भाई ये नोट कैसे बनेगा। अब अगर आप ये देखें, अब हमने हमने ये थोड़ा सा जो सिनेरियो बनाया था, इसके के अंदर में 3 चीजें ली, हमने कहा हम 3 चीजें जो है एडजस्ट करेंगे और प्रॉफिट 17,700 ले जाएगा। अब हम देखते हैं कि इन 3 चीजों को, इन इन सारे जो स्टैंडर्ड के लवाजमात हैं, इसमें हम नोट को कैसे बनाएंगे। तो अब स्टैंड अब क्या आप क्या देंगे, हम जाके एक नोट डिफाइन करेंगे यहाँ पे फॉर्मेट में, ये का एमपीएम का एक नोट बनाएंगे, नोट नंबर एक्स या 30 जो भी आपका नोट नंबर होगा आप उसको नोट नंबर देंगे। उसके अंदर बताएंगे द ग्रुप, उसके अंदर जनाब बताएंगे द ग्रुप यूजेस एडजस्टेड ओपनिंग प्रॉफिट। आपने स्टार्ट कैसे करना है, आपने स्टार्ट करना है यहाँ से। आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये जो पोर्शन आपका है, ये जो पोर्शन हम करना चाह रहे हैं, ये कहाँ है, ये पोर्शन यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं घुसा हुआ है। तो आप बेसिकली आप जीपी को नहीं शेयर रहे, आपने इस प्रॉफिट को एडजस्ट करना है, आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट क्या करेंगे, आप बताएंगे जनाब हम अपनी प्रॉफिट जो है उसको एडजस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद वाई मैनेजमेंट कंसिडर दिस मेजर्स, आपको रीजन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप सारा उसको बताएंगे कि मैनेजमेंट जो है वो क्यों ये चेंज करना चाहती है, तो आप उसका रीजन देंगे प्रॉपर्टी। उसके बाद आप एक रिकंसिलिएशन यहाँ बनाएंगे। आप कहेंगे जनाब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, उसमें आपने जो है एडजस्टमेंट जो है अपने वो तीनों एडजस्टमेंट आप दिखाएंगे उसको। उसके बाद दैट आप दिखा देंगे हमारा जो है वो प्रॉफिट जो है एडजस्टिंग एडजस्टिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 13,700 आएगा। अब उसके आगे आपने उसका टैक्स दिखाना है कि इसमें टैक्स के कहाँ कहाँ टैक्स का इम्पैक्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ आपका टैक्स कम होगा, कहाँ कहाँ टैक्स ज्यादा होगा। फिर आपने बताना है कि एनसीआई को इससे कितना फायदा होगा और कितना लॉस होगा। तो वो सारा इफेक्ट जो है वो आप इस तरह एक जो है रिकंसाइल नोट बनाएंगे, और ये नोट बना के आप अपने अपनी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट फॉर्म में शो करेंगे। इसकी मेथोडोलॉजी आपको लिखनी पड़ी, ये सिर्फ आपके आपके नॉलेज के लिए मैंने लिखी है कि यहाँ पे एनसीए का शेयर 20% है, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। आपका टैक्स रेट जो है वो 9% है, उसके हिसाब से ये सारी कैलकुलेशन की गई हैं। तो ये मेथोडोलॉजी सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये अपने नोट्स में नहीं देनी। तो यहाँ पे ये इस तरह का एक छोटा सा नोट लगेगा जिसमें आप सारा एक्सप्लेन करेंगे कि एमपीएम जो है मैनेजमेंट वो क्या चाह रही है, वो आपका प्रॉफिट जो है वो 12,000 से शूट करके 13,700 पे क्यों लेके जाना चाह रही है। अब उसके लिए कुछ जो है वो तरीकेकार बताया है उन्होंने, जिस तरह मियां साहब ने डिस्कस किया अभी फिलहाल में 5 गेट्स। तो 5 गेट्स क्या है, वो ये 5 गेट्स हैं। इसको थोड़ा सा हम ब्रीफ यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये कैसे हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। आपको जब एमपीए में जाना है तो सबसे पहले चीज जो हमें चेक करनी है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास फाइनेंशियल मेजर्स हैं। तो ये आपके पास फाइनेंशियल मेजर होनी चाहिए, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है कि मैं कहता हूँ नंबर ऑफ क्लाइंट्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो ये मेरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो उसको नहीं, वो नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है आपका फाइनेंशियल मैयर चाहिए। तो सबसे पहले देखूंगा, अब देखिए ये मेरा फाइनेंशियल मैयर है, ये मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये मेरा फाइनेंशियल मैयर है। ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मेरा पहला जो है वो स्टेप मेरा पूरा होता है, मैं दूसरे स्टेप पे जाता हूँ। दूसरा स्टेप कहता है कि ये सब टोटल होना चाहिए। तो सब टोटल अभी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। सब टोटल मींस योर ग्रॉस प्रॉफिट, योर प्रॉफिट, रेवेन्यू इंडिविजुअल जो है वो आपका सब टोटल नहीं है। एम्पेयरमेंट लॉस, एम्पेयरमेंट प्रॉफिट आपका इंडिविजुअल जो है सब टोटल नहीं है। तो ये सब चीजें जो है आपकी इग्नोर हो जाएंगी, आप सिर्फ सब टोटल पे जाके जो है वो एमपीएम को अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद वो कहता है कि ये पब्लिक कम्युनिकेशन है, आप अगर ये आईएफएस ना होता तो आप क्या करते हैं, आप जाके न्यूज़ लेटर में छापते हैं, अब पब्लिकली इसको अनाउंस करते हैं। तो वो कहता है ये भी होना चाहिए कि आप इसको ऑलरेडी जो है पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि मैनेजमेंट व्यू, डेफिनेटली वो ये अंडरस्टूड है कि मैनेजमेंट व्यू है। जब भी आप इस तरह की पब्लिकेशन करते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड कहता है ये बाय डिफॉल्ट जो है हम इसको मैनेजमेंट व्यू ही तस्वर करेंगे। हाँ ये भी हो सकता है, बाय लॉ भी हो सकता है, कोई कंपनी कंट्री की रेगुलेशंस के तहत भी अभी काम कर सकते हैं, लेकिन जो जो बाय डिफॉल्ट जो है वो हम इसको स्टैंडर्ड कहता है, हम इसको मैनेजमेंट व्यू ही तस्वर करेंगे। उसके बाद फाइनली हम देखेंगे कि ये जो है, ये जो चीज़ आप कर रहे हैं, ये जो है वो किसी आईएफएस में नहीं आ रही। आईएफएस तो कहता है कि आप इम्प्लीमेंट करें, लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे, आप आईएफएस को डेविएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेविएशन जरूरी है आईएफएस की, आप आईएफएस के तहत काम नहीं कर रहे हैं, आप आईएफएस के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो ये चार पांच तरीके उस स्टैंडर्ड तय हैं। जब ये पांच के पांच सारे ही सारे जो है एक्सेप्ट हो जाएंगे, तब आप कहेंगे कि ये आपको जो है ये आपका एमपीएम बनेगा। अगर इसमें एक स्टेप भी आपका मिस हो जाएगा तो आप उसको एमपीएम नहीं बना सकते। तो इसके अंदर जो मेन चीज जो थी, जो समझने वाली चीज थी, वो आपकी आपकी सब टोटल थी। वो भी हमने तो कोशिश की है कि हम यहाँ पे आपको टोटल डिटेल में समझा दें। तो ये बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने अभी मेरे सामने प्रेजेंट किया। उसको फिर हमने थोड़ा सा आपको एक प्रैक्टिकली जो है यहाँ पे लाके हमने कोशिश किया है कि आपको ये भी समझ आ जाए कि प्रैक्टिकली सिंपल वे में आपको इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो ये हमारी टोटल प्रेजेंटेशन थी जो हम लोगों ने तैयार की थी मियां साहब ने और हमने मिलके। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और एक हार्ड टॉपिक था जो पब्लिकली इस तरह अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। और इंशाल्लाह अब आपको मेरे ख्याल से ये जो एमपीएम है ये कम्प्लीटली जो है समझ आ गया होगा। और अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे थोड़ी देर के लिए। अगर किसी के पास क्वेश्चंस हैं तो वो अपने माइक ऑन करके वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन आप करें, इंग्लिश में करें, उर्दू में करें। तो इंशाल्लाह ये सब अवेलेबल है हमारे साथ। तो हम लोग इंशाल्लाह आपको आंसर करेंगे। उम्मीद तो ही कर सकते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी मेहनत की है कि चीज़ जो है वो सिंपल तरीके से आपके सामने लाई जाए, ताकि जो हमारे साथ लोग बैठे हैं जिन्होंने हमारे साथ टाइम दिया है वो जो है इससे फ़ायदा उठा सके। ये हमारा एक मोटिव है कि हम लोग जो है ना लेक्चर जो इस तरह किया करेंगे कि उर्दू और इंग्लिश दोनों में लेक्चर्स किया करेंगे, ताकि लोगों को जो है ना इजीली समझ आ जाए। तो अभी हमारा एक नेक्स्ट सेक्शन भी हमारा आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो वैट पे हम लोग एक छोटी सी हमारी काविश है कि वैट्स, क्योंकि दुबई के अंदर, यूएई के अंदर वैट जो है वो काफ़ी पॉपुलर है, वैट के बगैर गुजारा कोई नहीं है, हर जगह वैट आ चुका है। तो अभी वैट पे जो हमारे पास ट्रेनिंग अवेलेबल हैं वो बहुत महंगी हैं, वो अप्रोचेबल नहीं है लोगों के लिए। तो हम लोगों ने कहा कि क्यों ना हम इसको एक इकोनॉमिकल करें, इसको ज़रा आसान करें लोगों के लिए। तो हम एक पैकेज लेके आए हैं जो सिर्फ 499 का एक पैकेज है। इसके अंदर हम लोगों ने प्लान किया है कि हम 10 लेक्चर करेंगे इसके अंदर। और 10 लेक्चर के अंदर भी हर लेक्चर में 2 लेक्चर होंगे, तो टोटल जो है इंशाल्लाह 20 लेक्चर हम करेंगे इसके अंदर। और हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि इसको इन लेक्चर्स को हम उर्दू में करें, ताकि लोगों को ईजिली समझ आए। और हमारे पास पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन भी हमारे पास हैं। और इसमें हम हम कोशिश करेंगे कि अगर जो हार्ड टॉपिक्स हैं वहाँ पे कुछ हमारे गेस्ट स्पीकर्स अगर हमारे साथ ज्वाइन कर सकें तो हम उनको भी लेके इंशाल्लाह आएंगे। और ये सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे को इसका पहला लेक्चर हमारा होगा इंशाल्लाह। और वो लेक्चर हम कोशिश करेंगे वो लेक्चर फ्री करें हम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सकें और देख सकेंगे हम लोग किस तरह लेक्चर कर रहे हैं। तो एनीवे जैसे ही अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप साथ साथ कर सकते हैं, ताकि हम लोग जो है आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकें। रिकॉर्डिंग सर चल रही है, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग अभी बंद होती है आपको शेयर कर देंगे, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा कोई टॉपिक से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो, या कोई हमारा जो नया प्रोग्राम अभी आ रहा है वेट पे, इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ काइंडली ज़रा शेयर करें, हम लोग आपको आंसर करते हैं। ठीक है जी, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन तो कोई नहीं आ रहा। फिर मियाँ साहब ठीक है जी, वाइंड अप करते हैं फिर इसको। जी मियाँ साहब। माइक ऑन ही हो रहा है सब। मैं करना चाह रही थी, मैं देखना कि तुम अनम्यूट। ओके सर, ये सब देखिए
हो गया मेरे साहब, हो गया माइक? Yeah, now it's unmute. Thank you very much. So thank you very much, everyone, for your presence, really. And the thing is that we are always available for taking your questions. Even you can contact us through the WhatsApp group that you have already joined. And thank you very much for joining that WhatsApp group. In fact, that is just a platform at which you can like put us any question relevant to your IFRS. You are practicing accountants, you are professionals. So that's the platform on which we would be sharing our knowledge, in fact. So you can also share your knowledge on that platform through the admin, obviously, because we have restricted the sharing of your material through the admin only. So you can reach any admin, preferably Mr. Shakeel is there, always available with you. So he would be sharing your material after scrutinizing it, that is that suitable for sharing, and your material would also be shared in that group. So thank you very much for joining us. God bless you all. Assalamualaikum. Is there any question, please? Yes, this is Arshad. Arshad, yes, Arshad, please. Yes, thank you for the session. The good thing was that I've already attended one of the one or similar sessions like this. The difference was that Thank you. this session was more audience friendly, means it was communicated Thank you. in very easy words and with examples that were very good for us, especially the Thank you. non-core finance people. So simply, Thank you, Mr. Arshad. already you explained very well कि ये सब totals होंगे of profit and loss, right? This means KPIs, for example, interest cover is a performance-based measure where we have both of the figures belong to profit and loss, interest expense and profit, right? It is exactly the same figures. It will not change. There will be no reconciliation. Still, it could be MPM or it cannot be because it didn't change any of the figures within the original profit and loss. It's just a अच्छा, जो मुझे disclosure. समझ आई है, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी दरखास्त ये करूंगा कि सलमान एंड मुस्तफा, आप काइंडली अपने माइक जो है वो म्यूट कर लीजिए। आपको हम जरूर क्वेश्चन का भी मौका देंगे, क्योंकि आपकी वो जो आवाज टकरा रही है, सलमान खास तौर पे आप प्लीज म्यूट कर लीजिए ताकि मैं इजीली कम्युनिकेट कर सकूं। या थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अरशद, मुझे जो आपकी बात जो समझ आई है वो कुछ यूं है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम की नेटिंग ऑफ की आप कोई बात करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट छोटी सी प्रेजेंटेशन जो अभी शकील साहब ने दी है उसमें एक छोटी अमेंडमेंट कर लीजिए। ये जो प्रेजेंटेशन शकील साहब ने आपको प्रॉफिट लॉस शो किया है, ये एज पर IAS 1 था। जब हम इसको IFRS 18 के मुताबिक करेंगे तो वहां पर ऑपरेटिंग कैटेगरी अलग से एक सेगमेंट होगा, इन्वेस्टिंग कैटेगरी अलग से एक सेगमेंट होगा, फाइनेंसिंग कैटेगरी अलग से एक सेगमेंट होगा। तो जो ऑपरेटिंग कैटेगरी का सेगमेंट है वो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रहा होगा, और जो इन्वेस्टिंग कैटेगरी होगी वहां पर आपको जितनी इन्वेस्टमेंट्स, मैं सादा जुबान में बात करूंगा, जो जितनी इन्वेस्टमेंट्स आपने की होंगी वहां से जो रिटर्न आ रहा होगा, वो जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, आपके बैंक डिपॉजिट्स हैं, वहां पर आपको इंटरेस्ट जिनका ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं है, दैट वुड बी प्रेजेंट ओवर देयर। फिर फाइनेंसिंग कैटेगरी के अंदर सिंपल फाइनेंशियल चार्जेस जो होंगे, दोज वुड बी प्रेजेंटेड ओवर देयर। तो इसलिए या तो आप अरशद दोबारा प्लीज अपना क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, अदरवाइज सिंपल इज दिस कि आपने जो भी इनकम्स और एक्सपेंसेस फ्रॉम द प्रॉफिट लॉस उठानी है, जो कि प्रॉफिट लॉस में सब टोटल अपीयर नहीं हो रहे, उनसे मुतल्लक मैनेजमेंट के व्यू पॉइंट के मुताबिक इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, वो अपना एक परफॉर्मेंस मेजर बना लेती है। इसकी सादा तरीन एग्जांपल ये है, सादा तरीन एग्जांपल कि प्रॉफिट जो आपका है वो नेट ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस है, यस, लेकिन उस प्रॉफिट में रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस माइनस हुआ था, उसको ऐड बैक कर लें तो अब आप इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस की एक नई फिगर पे पहुंचे हैं। ये वो फिगर है जो कि ऑलरेडी वाज नॉट अपीयरिंग इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो वो जो नई फिगर है जिस पे आप पहुंचे हैं, दैट इज योर इनफैक्ट क्या कह लें MPM।
तो अगर इसके अलावा कोई आपका सवाल है प्लीज अरशद, अब आप पहले सवाल कर लीजिए, बाद में मैं फिर जुल्कुरनैन ने हाथ खड़ा किया वो उनका जवाब दूंगा जी। अरशद प्लीज। या अहमद सर, वेरी क्लियर, बहुत क्लियर है कि अगर कोई थैंक सब टोटल को इम्पैक्ट नहीं कर रहा एग्जिस्टिंग फिगर से, और मैं कोई ऐसा केपीआई, ऐसा रेशो डिस्क्लोज करना चाह रहा हूँ जो कि किसी भी तरह से एग्जिस्टिंग पीएनएल को एडजस्ट नहीं कर रहा, एग्जिस्टिंग सब टोटल को एडजस्ट नहीं कर रहा, एज एन एग्जांपल इंटरेस्ट कवर रेशो, तो वो एमपीएम नहीं होगा। हाँ देखें, एक बात याद रखिएगा, अब जो इंटरेस्ट कवर रेशो है आपकी, वो इंटरेस्ट कवर रेशो इंटरेस्ट को और वहां पर आपकी जो है वो उसको देख रही है आपकी ऑलरेडी जो प्रॉफिट आपका बिफोर इंटरेस्ट था। अब ये एक आपकी रेशो है, हम देख रहे हैं कि नेट ऑफ आपकी होनी चाहिए, मींस अब देखें एबिटा इज नॉट अ रेशो। देखें जब आप कहते हैं रेशो, रेशो मींस यू आर रिलेटिंग वन इंफॉर्मेशन टू अनदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो आपकी रेशो कहलाती है। जबकि जब हम एमपीएम कह रहे हैं दैट इज नॉट अ रेशो और रिलेटिंग वन इंफॉर्मेशन ऑन एन अदर इंफॉर्मेशन, मींस मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो नहीं कह रहा, ऑल्दो वो ग्रॉस प्रॉफिट भी प्रॉफिट लॉस की आइटम है और सेल्स भी प्रॉफिट लॉस की आइटम है, नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रेशोज। एमपीएम इज नॉट अ रेशो, रिमेंबर, एमपीएम इज अ नेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, वी आर नॉट रिलेटिंग एन इंफॉर्मेशन टू अनदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, इस बात को जरा समझिएगा। तो हम अदरवाइज तो प्रॉफिट लॉस की आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की रेशो भी आती है, ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो भी आती है, इंटरेस्ट कवर रेशो भी आती है, वो सारी रेशोज हैं जो अपॉन सेल्स या अपॉन प्रॉफिट हम जिस तरह से भी वर्कआउट करते हैं, वो एमपीएम नहीं है। एमपीएम इज नेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस विच इज नॉट डिफाइंड बाय आईएफआरएस, ये बात याद रखिएगा। अब डिफाइंड बाय आईएफआरएस, ग्रॉस प्रॉफिट इज नेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस डिफाइंड बाय आईएफआरएस, लिहाजा वो एमपीएम नहीं है। तो इसलिए मैंने बड़ी सादा एग्जांपल ली कि हमारी इनकम स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट बिफोर रीस्ट्रक्चरिंग कहीं नजर नहीं आता, ठीक है, और उसको रिलेटिव फॉर्म में नहीं ले रहे, एब्सोल्यूट फॉर्म में लेना है। एक और सादा जुबान में बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट फॉर्म में मैं ले रहा हूं कि जी मेरे पास प्रॉफिट बिफोर रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता अगर मेरी रिस्ट्रक्चरिंग ना होती, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर मैं ना इसमें माइनस करूं, या इस साल मैंने अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक्सपेंस आउट ना किया होता तो मेरा प्रॉफिट क्या होता, ठीक है। तो आई एम नॉट गिविंग इट इन अ रिलेटिव फॉर्म, एक एब्सोल्यूट फॉर्म जो है ना वो एमपीएम है, रिलेटिव फॉर्म एमपीएम नहीं है। आई ट्रस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये वाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माय प्लेयर्स, जुल्कुरनैन आप प्लीज सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू वेरी मच, सलाम, वंडरफुल प्रेजेंटेशन प्लेयर्स, की और प्लेयर्स, एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर अभी आपने रेशो पे डिस्कस कर लिया। एक्चुअली माय क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू रेशो। पहले भी हम क्या हो रहा था हाँ फॉर मोस्ट ऑफ द क्लाइंट, बिकॉज वी आर फॉर द फाइनेंसिंग कंपनी, बिकॉज इन यूएई मोस्टली द equity part is most of the part of the debt financing, because if it is equity part is not that much. So bank always sometimes they have the subordination for the PNW ratio, and it is very difficult to add any additional financing line. So अब अगर हम PMP, same thing we are doing before also, like from auditor we are getting a separate certificate. We are that time we are not saying the word PMP, but we are calculating the profit adjusted, and we are showing that this is the adjusted profit. Based on that profit, our PNW is not evaluating the subordination of the bank. So this same thing now, what I understand, we can same thing explain in the notes of the account. We do not need to go for any additional letter from the auditors for the finance, mostly most of the financing companies, because now we can use same PMP and to calculate the PNW ratio or any subordination ratio for the financiers. So this we can explain the same report in the notes of accounts. Thank you, sir. अच्छा जुल्कुरनैन, इसमें एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, आप पीएमपी बोल रहे हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल के लिए, ये एमपीएम है, एक जी बात सॉरी सर, बहरहाल ये ओके इसको बात नहीं, ठीक है। अच्छा दूसरी, रेशियोज जो हैं डू नॉट फॉल अंडर एमपीएम, ठीक है, रेशियोज का कोई ताल्लुक इससे नहीं है। इसका मैंने बड़ा सादा बता दिया कि ये आपका नेट ऑफ, उसका सब टोटल कह लेना, एक एब्सोल्यूट फॉर्म है, रिलेटिव फॉर्म नहीं है, ये दो लफ्ज ज़हन में रख लीजिएगा। रेशियोज रिलेटिव फॉर्म होती हैं और ये एब्सोल्यूट फॉर्म में आपका एक सब टोटल है, विच इज सब टोटल मींस सेल्स मींस इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो इफ यू डोंट माइंड मैं सलमान साहब का ले लूं जी। सलमान इकबाल प्लीज, योर हैंड इज रेज्ड, प्लीज बताइएगा।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जी प्रेजेंटेशन में आपने बताया था एमपीएम नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेंशन किया जा सकता है, और वो उसका रेफरेंस जो है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में दे सकते हैं, या ठीक है। या या अच्छा, दूसरा, लेकिन जो 5 गेट टेस्ट था उसके अंदर लिखा हुआ था इट इज पब्लिकली कम्युनिकेटेड आउटसाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी 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 तो ये दोनों ये जरा आपकी दोनों में। कंफ्यूजन, मैं आपकी बिल्कुल आपकी दुरुस्त कंफ्यूजन है। दो सिनेरियो दिए थे, ए एंड बी, ठीक है जी। जी अच्छा, ए सिनेरियो के अंदर मैंने उसको प्रॉफिट लॉस, वो नोट 30, इफ यू रिमेम्बर, नोट 30 जी को जी मैंने स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस के अंदर नहीं डिस्क्लोज किया था। मैंने कहा था कि जी वो जाएगा डिस्क्लोजर के अंदर, नोट्स के अंदर आएगा। अच्छा, इसका सादा तरीन आंसर ये है सलमान साहब, कि आप भले उसको स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में एक नोट के तौर पे दें, एक रेफरेंस के तौर पर अपीयर हो, लाइन आइटम के तौर पर, या वो सिर्फ डिस्क्लोजर में जाए, हर सूरत में पब्लिक कम्युनिकेशन जरूरी है। 5 जो गेट है आपका टेस्ट, उसमें पब्लिक कम्युनिकेशन इज अ मस्ट। मैनेजमेंट रिव्यू मींस मैनेजमेंट डिफाइंड होना चाहिए, इज अ मस्ट, ठीक है। और रिकंसिलिएशन डिस्क्लोजर में भी जाना इज अ मस्ट, ठीक है। तो वो सारी चीजें अच्छा, जो हैं वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वो सिनेरियो ए बी, एक प्रेजेंटेशन का स्टाइल मैंने आपको बताया था, और मैंने स्टार किया था कि जी वो जो है बेहतर यही है कि जी आप इसको लाइन आइटम के तौर पे ना दिखाएं, इसको डिस्क्लोजर में चलते रहना था। लेकिन सर ये मुझे समझ नहीं आई कि आउटसाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस कि वो नोट्स में भी नहीं आएगा, पब्लिक नहीं 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 नहीं, कम्युनिकेशन नोट्स में आउटसाइड। आएगा। देखें देखें, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिकंसिलिएशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ नोट्स, हाँ जी। ठीक है ना। तो वो तो रिकंसिलिएशन जी, तो नोट्स में डेफिनेटली आएगी। अच्छा, लेकिन जो दूसरी प्रेजेंटेशन है उसके अंदर फिर उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि नोट्स क्रॉस रेफर कैसे होंगे, नंबर वन। और वो मुझे नहीं क्लियर हुआ। नंबर टू ये अच्छा, कि हाँ ये सर के कम्युनि मुझे क्लियर नहीं हो रहा। देख लें, अगर आंसर करना कोई मसला नहीं। देखें, मैंने कि आपको बता रहा हूँ वो कम्युनिकेटेड आउटसाइड शकील, आउटसाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक एक मिनट, सलमान साहब, शकील साहब ने उस वक्त कहा था कि जी नोट 30 का एक रेफरेंस है, तो नोट तो जी, लाजमी है, ये जहन में रख लीजिए। नोट लाजिम है, जो कि रिकंसिलिएशन और आपका सिंगल रिकंसिलिएशन के तौर पर आएगा। जो सिर्फ सिंगल प्रॉफिट नोट के लॉस तो से आएगा। वन नोट के नहीं सर। प्रॉफिट जो लॉस। एमपीएम आपका है ना, जो एमपीएम है ना, एमपीएम से मुताल्लक नोट आपका वन नोट के तौर पर डिस्क्लोजर में लिखा जाएगा, जो नोट 30 सपोजली कहला रहा है। अब वो नोट 30 जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें प्रॉफिट में क्या चीज ऐड बैक की कि वो एमपीएम बना, और फिर उसका टैक्स का इफेक्ट और उसका एनसीआई का इफेक्ट, ये सर ये चीजें एक मुझे समझ सिंगल आ गई नोट है। के अंदर। जी, ये मुझे समझ आ गई है। मैं कह रहा हूँ ये बस क्रॉस रेफर दैट्स इट कहाँ से होगा? सर। क्रॉस प्रॉफिट रेफर लॉस जो से। है ना, प्रॉफिट लॉस में आप सिनेरियो बी में अगर चले जाएंगे तो वहां पर लाइन आइटम के तौर पर नजर आएगा आपको कि जी ये चीज है। अगर नहीं भी आप जाते तो कोई बात नहीं, आप नोट 30 के अंदर लिख दें कि हमारे एमपीएम का वन नोट ये है। जरूरी नहीं है कि फेस पे नजर आए, ये बात इंपॉर्टेंट है समझना। अच्छा देखें, अच्छा 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 अच्छा। हाँ, IFRS 18 ना एक और डिस्टिंक्शन लेकर आ रहा है, ये जरा सब दोस्त बड़ा इसको गौर से सुनिए। एक लफ्ज है लाइन आइटम, और एक लफ्ज है आइटम। IFRS 18 ये कह रहा है कि जो चीजें हमें फेस पर नजर आएंगी प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट के, उनको लाइन आइटम कहेंगे, और जो नोट्स में नजर आएंगी उनको आइटम कहेंगे। तो अगर ये चीज ठीक। डिफाइन हो गई, तो मैं ये कह रहा हूं कि सिनेरियो ए में मैंने उसे लाइन आइटम के तौर पे शो नहीं किया था, लेकिन नोट में मौजूद होगा 30 वो। जबकि सिनेरियो ठीक बी है। में मैंने इसको लाइन आइटम के तौर पर भी शो किया था, और नोट में भी मौजूद होगा। नोट में मौजूद होना इज अ मस्ट, लाइन आइटम के अच्छा, तौर पे आप करें या ना करें, वो दैट इज नॉट अ मस्ट। ठीक 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 ठीक। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच ठीक है सलमान सर। साहब। मुस्तफा, योर क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सो मच सर। सर मेरे प्लेयर्स। दो क्वेश्चन थे। एक तो ये कि जब शकील साहब ने यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाई थी, तो उसमें सब टोटल्स आ रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट और हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे। लेकिन अदर ऑपरेटिंग इनकम और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस से पहले एक अनलेबल्ड या अनटाइटल्ड एक सब टोटल आ रहा था,
and that is also a subtotal of income and expenses. So can we, also use this अच्छा नहीं, subtotal? एक मिनट, मैंने वहां पर ना थोड़ा सा मुस्तफा क्लियर कर दिया था। एक बात छोटी सी ज़हन में रख लीजिएगा, शकील साहब ने सिर्फ उसको इलिस्ट्रेटिवली बात की है। अदरवाइज जी IFRS 18 में जो सब टोटल्स डिफाइन होंगे वो एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सब टोटल नया आया और एक प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड टैक्स का सब टोटल नया आया, ठीक है। तो वो एक खाली जगह इन्होंने जरूर रखी थी, लेकिन उसको प्लीज IFRS 18 की प्रेजेंटेशन नहीं समझेंगे। शकील साहब ने उसको सिर्फ और सिर्फ बात को आसान करने के लिए एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि हम इस तरह से आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। तो बाय द वे हमारा सब टोटल जो है वो ही ये मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर है, और वो सब टोटल जो होगा वो हमने इस तरह से डिस्क्लोज करना होगा जैसे मैंने अभी बात की है थोड़ी देर पहले। ओके ओके सर। और ठीक है, दूसरा ये कि आपने कहा था कि जो एडजस्टेड एबिटा है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज आर एमपीएम, लेकिन उसके साथ एक और सब टोटल था विच वाज अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड amortization। अच्छा वो मैं क्लियर कर देता हूँ, बड़ा बड़ा उम्दा सवाल है। उस वक्त मैंने हल्का सा इशारा दिया था। अगेन इस सवाल को समझिएगा, जो एबिटा है वो कहां से हमने शुरू किया? हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरू किया, और उसमें क्या ऐड किया? हमने टैक्स ऐड किया, ऐड बैक किया, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है ना, इंटरेस्ट फाइनेंशियल चार्जेस ऐड बैक किए, हमने डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ऐड बैक की, तो हम एबिटा तक पहुंच गए। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, वो जो कह रहे हैं ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट, वो एबिटा नहीं है। क्योंकि अब दोबारा जरा थोड़ा सा अपने जहन में इसको तस्वीर कशी कीजिएगा। हम शुरू होते हैं, मैं यूजुअल इस वक्त आज की प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा हूं, मैं अभी जानबूझ के कैटेगरी वाली में नहीं जा रहा, IFRS 18 की बात नहीं कर रहा था कि आपको जहन में आसानी से बात आ जाए। हम शुरू होते हैं सेल से, माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहुंचे हम ग्रॉस प्रॉफिट पे, माइनस किया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पहुंचे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, ऐड की अदर इनकम आज की तारीख में। बिल्कुल तो हम पहुंचे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे, माइनस किया हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस, पहुंचे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, माइनस किया टैक्स, पहुंचे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। अब इसमें जब मैं ऐड बैक करूंगा ना टैक्स, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, तो एबिटा होगा, एम आई राइट? लेकिन जब मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन और इंपेयरमेंट ऐड बैक कर रहा हूँ तो वो जो अदर इनकम वाली चीज है ना वो रह जाएगी नीचे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? तो इसलिए एबिटा जो है वो चूंकि प्रॉफिट से नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसमें अदर इनकम उसका हिस्सा है, जबकि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसमें के डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंपेयरमेंट ऐड बैक हो रही है उसमें अदर इनकम है ही नहीं है। जो कि अब मैं आज की जुबान में बात करूं तो वो आपकी इन्वेस्टिंग कैटेगरी है, वो मिस हो जाती है। तो इसलिए वो कह रहा है 118 पैराग्राफ के अंदर कि उसको आपने नहीं लेना, आपने अगर एडजस्टेड एबिटा करना है तो आप लें। लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक और बड़ी उम्दा बात करूं, आप एडजस्टेड प्रॉफिट किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब आप उसको अलग से एक एडजस्टेड प्रॉफिट बनाना चाहें, आप कहें जी मेरा ये एडजस्टेड प्रॉफिट है, इसमें मैंने इन्वेस्टिंग इनकम्स नहीं लेनी, आप डिफाइन कर दें कि ये इसलिए नहीं ले रहा कि मैनेजमेंट का अपना एक व्यू पॉइंट है और वो पब्लिकली इसको बताता भी है, तो वो अपने इस व्यू पॉइंट को सामने रखकर वो कहता है कि ये मेरा डिफाइंड, याद रखिए इसमें आपको इंडिपेंडेंस है, मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर, आपको इंडिपेंडेंस है, जिस मर्जी सब टोटल को आप मैनेजमेंट डिफाइंड के, लेकिन पब्लिकली और मैनेजमेंट व्यू का होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। माय प्लेयर्स जी, अच्छा जी मैं इजाजत चाहूंगा, आई एम रियली सॉरी, आई एम गेटिंग लिटिल लेट, I cannot take more questions and I trust there is no hand raised yet. Thank you so very much for all the participants for attending the session, and I trust that this type of sessions we would remain be communicating with you. And very special thanks to Muhammad Nafis Saab sir, nice of you for attending the session. You are our senior and you are our source of in fact the knowledge as well. सर बहुत शुक्रिया, अगर आप कुछ बात करना चाहें तो फ्यू वर्ड ऑफ विजडम फ्रॉम योर साइड सर। I trust Muhammad Nafis Saab is not there. Anyways, thank you so very much everyone and God bless you all. Thank you very much Mian साहब, thank you very much, so nice of you. My pleasure, my pleasure, my इंशाल्लाह pleasure. नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है आप लोगों से, नेक्स्ट सेशन बैठ का इंशाल्लाह जो नेक्स्ट संडे को होगा, तो इंशाल्लाह उसमें ज्वाइन करेंगे। Thank you, thank you, thank you for all participants, thank you very much.